Hello and welcome. Welcome to learning session number 5 of chapter number 3 of Science 1, which is chemical reactions and equations. So far, what all have we seen in this chapter? We had seen introduction and then we had seen chemical and physical changes. What are chemical and physical changes? Chemical changes are the ones in which chemical bonds are broken or new chemical bonds are formed. And what are physical changes? They are mostly change in states of substances or state of matter. Say, for example, solid state to liquid state or liquid state to gaseous state, so on and so forth. Those are mostly physical changes. Then we had seen chemical reactions through experiments, and we had seen chemical equations, which are a representation of chemical reactions. Then we had seen how to balance chemical equations, and in the last learning session we had seen types of chemical reactions. For example, combination reaction is a type of reaction where two or more reactants combine to form a single product. Okay. Then decomposition reaction. What is the meaning of decomposition? To it means breaking down of a big thing into smaller pieces. Okay. So what will be decomposition reaction? It will be a reaction in which a single reactant is breaking down into smaller pieces through a reaction. Okay, so it will have only one reactant and more than one products. Then displacement reaction. What is the meaning of displacement? Gum ho jana, bichhad jana. So what is going to happen in displacement reaction? There's a big molecule. One of the parts of this big molecule is going to get displaced from the original molecule, and it is going to get attached to some other molecule. That is displacement reaction. What is double displacement reaction? It is a reaction in which the ions of the two molecules get exchanged. That is double displacement reaction. Then endothermic is a reaction in which heat is being absorbed, and exothermic is a reaction in which heat is given out. Okay, so these were the types of chemical reactions that we saw. Then what are the topics we're going to cover today? First, we're going to see factors affecting the rate of chemical reaction, and we're going to discuss a few end of chapter questions. The objective for today will be students will be able to explain rate of chemical reaction and enlist. What is enlist? Enlist मतलब एक list बनाना. Okay. So enlist and explain factors affecting it. What is it here? Rate of chemical reaction. So rate of chemical reaction explain करना आना चाहिए. कौन से फैक्टर्स है जो केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं उसका एक लिस्ट बनाना आना चाहिए और उस लिस्ट को एक्सप्लेन करना आना चाहिए. दैट इज योर ऑब्जेक्टिव फॉर टुडे. ओके. As promised, before beginning any new learning session in this particular chapter or any chapter in chemistry, I'm going to remind you all to keep by hearting this particular table. It is very important to by heart this table if you want to write the name of a molecule from its molecular formula, or if you know the name of the molecule but from the name of the molecule you want to write the molecular formula. For both of these, by hearting this particular table is important, and if you do not by heart this particular table, all chapters in chemistry you will find very difficult. Okay, great. So what are factors affecting rate of chemical reactions? So what is, before we actually start looking at the factors, what is rate of chemical reaction? Okay, so rate of reaction means the speed of chemical reaction. If I say the rate of reaction is very high, यानी वो chemical reaction बहुत fast हो रहा है. Okay, and if I say the rate of chemical reaction is very low, then what is happening is वो chemical reaction बहुत slow proceed कर रहा है. Okay, so rate मतलब speed. Okay, so the speed or rate of chemical reaction depends on 5 things. Okay, first one is nature of reactants. Second one is size of particle of reactant. What is reactants? यहाँ पे दो बार reactants word आ गया. So whenever a chemical reaction occurs, जो चीजें एक दूसरे के साथ react हो रही है, those are reactants. और reaction होने के बाद जो end में मिल रहा है, that is products. Okay. So जो react हो रहा है उसका nature क्या है उस पर depend करेगा. जो react हो रहा है उसके size पे depend करेगा, उसके जो particles है उसका क्या size है. Concentration of reactants, temperature of reaction किस temperature पे हो रहा है, and the final one is catalyst. These are the 5 things which affect the speed of a chemical reaction or the rate of chemical reaction. Okay, so there's a question here. Okay, so there is a reaction of metals aluminium and zinc taking place with dilute hydrochloric acid. Okay, so what am I doing here? मैंने दो बीकर ले लिए and in both the beakers I am putting dilute hydrochloric acid. दोनों में same acid डाला मैंने. In one of the beakers I put some aluminium pieces and in the other beaker I put some zinc pieces. तो यहाँ पे aluminium और hydrochloric acid का reaction होने वाला है और यहाँ पे zinc और hydrochloric acid का reaction होने वाला है. Okay, so the question is,
will there be any difference between the two reactions? इन दो reactions में कुछ difference तो होने वाला है क्या? Okay, and think of the answer and think of the reason कि अगर difference होने वाला है तो क्यों होने वाला है, अगर कोई difference नहीं होने वाला है तो कोई difference क्यों नहीं होगा. Okay, think of the answer. I'll give you 5 minutes for you all to pause the video. Not 5 minutes, I'll give you 5 seconds for you all to pause the video and think of the answer. Okay. Okay, I hope you pause the video and have some answers, some guess ready in your mind. Okay, so why should it be the why should the reaction be exactly same? क्योंकि दोनों metals है, right? दो एसिड दोनों बीकर्स में सेम है, इसमें भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में सेम एसिड है एंड बोथ ऑफ देम आर मेटल्स. एल्यूमिनियम इज आल्सो मेटल एंड जिंक इज आल्सो मेटल, राइट? सो दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, द रिएक्शन शुड बी एग्जैक्टली सेम. But what we find is on reaction of both aluminium and zinc with dilute hydrochloric acid, H2 gas is liberated and water soluble salts of these metals are formed. तो ये एक और सिमिलैरिटी है. क्या सिमिलैरिटी है? जब भी वो दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं, दोनों रिएक्शंस में हाइड्रोजन बाहर निकलने वाला. ओके, हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू बी लिबरेटेड यानी आजाद होने वाला. सो हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू बी लिबरेटेड, दैट्स वन सिमिलैरिटी. एंड वाटर सॉल्युबल मतलब क्या? मिक्स होने वाला. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो नमक यूज करते हैं वो पानी में मिक्स हो जाता है. सो दैट सॉल्ट इज वाटर सॉल्युबल. सो वाटर सॉल्युबल यानी पानी में जो मिक्स हो सकता है. ओके, सो वन थिंग इज गोइंग टू हैपन इन बोथ द रिएक्शंस इज दोनों रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाला और दोनों रिएक्शन में यू आर गोइंग टू गेट वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स. ओके, सो ये सिमिलैरिटी हो गया. बट व्हाट इज गोइंग टू बी डिफरेंट इज the reaction of aluminium takes place faster as compared to zinc. Okay, so left side में यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम, ये फास्ट होने वाला है. और यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन लिया था जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये थोड़ा स्लो होने वाला है. ये डिफरेंस है दोनों में. ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों डिफरेंट है? एज आई सेड, राइट, दोनों मेटल है, दोनों में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, दोनों में वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स बन रहे हैं, तो एक रिएक्शन फास्ट और एक रिएक्शन स्लो क्यों हो रहा है? The answer is aluminium is more reactive than zinc. Okay, aluminium बहुत easily react कर देता है, वैसे zinc इतना easily react नहीं करता element से. Okay, therefore the rate of reaction or speed of reaction of aluminium with hydrochloric acid is higher than zinc. इसकी वजह से aluminium का जो reaction का speed है वो increase होने वाला है और zinc का speed उससे कम होने वाला है, क्योंकि aluminium ज्यादा reactive है. It reacts easily with other metals or other elements. Okay. So what this is telling us is nature or reactivity of reactants influences the rate of chemical reaction. Okay, so nature मतलब क्या? nature का एक meaning हो सकता है reactivity. Okay, कि कितना easily react करता है. Another meaning of nature is nature means properties and characteristics of a substance, right? जब हम बोलते हैं कि the nature of this particular person is nice, it means क्या? वो इंसान के characteristics के बारे में बता रहा है, isn't it? Similarly, nature of substances मतलब क्या? उनके क्या properties है, क्या characteristics है, उससे भी जो reaction है उसका speed determine होता है. Okay, so make sure you're copying the meaning of nature in your notebooks. Okay, these 2 points you'll need not copy. And we're going to learn more about reactivity of metals in chapter metallurgy. Okay, that we're going to see in detail in chapter metallurgy. Okay. Next is size of the particles of reactants. Okay, so the rate of reaction depends on the size of the reactants also taking part in the reaction. Okay, so smaller the size of the reactant particles, higher is the rate of reaction. Okay, तो तुम लोग का जो reactants है जो एक दूसरे के साथ react कर रहे हैं, उनका जितना छोटा छोटा particles होगा, speed of reaction will be higher. Okay, और जितना बड़ा बड़ा particles होगा, speed of reaction will be lower. Remember that fact about size of particles of reactants. Okay, so that's it for size of particles of reactants. We're going to move ahead. Temperature of the reaction. Okay, so the rate of reaction increases on increasing the temperature. अगर तुम लोग ने temperature high कर दिया, for example तुम लोग ने गर्मियों में कोई reaction किया और वो same reaction तुम लोग ने ठंडी में किया, ठंड के मौसम में किया, और maybe you switched on the AC and then you proceeded with the same reaction. तो AC में जो रिएक्शन किया वो थोड़ा स्लो होने वाला है, गर्मी के टाइम पे दोपहर में जो रिएक्शन किया वो थोड़ा फास्ट होने वाला है. व्हाई इज दैट?
टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर यानी ज्यादा हीट मिलेगी, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? सो द मोर एनर्जी यू प्रोवाइड, द फास्टर द रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोसीड, दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, सो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिएक्शन काफी फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा देन स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन लो होने वाला। ओके, so that's temperature of reaction. Last one is catalyst. So what is catalyst? It is the substance whose presence in whose it is the substance in whose presence the rate of chemical reaction changes. Okay, उससे rate of chemical reaction change होने वाला है without causing any chemical change to it. But वो substance में कोई chemical change नहीं होने वाला है. Okay, it is called a catalyst. Let us try to understand this through an example. So this is an example of a reaction. इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, H2O2 is हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड decomposes. This is a decomposition reaction, right? एक reactant है और उस एक reactant के दो छोटे छोटे parts हो रहे हैं. So it is getting decomposed. So this is a decomposition reaction in which hydrogen peroxide decomposes to water. H2O is water and oxygen gas. Okay, so here oxygen gas is being released. So what I'm going to do next is, अभी पहले तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने आप दो चीजों में डिकम्पोज हो रहा था. What I'm going to do next is I'm going to put magnesium oxide. Okay, I'm going to put magnesium oxide. और when I put magnesium oxide in hydrogen peroxide, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो इंक्रीज हो जाता है अपने आप. बट मैग्नीशियम ऑक्साइड को कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है. स्टार्टिंग में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड था, रिएक्शन के एंड में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड ही रहने वाला है. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है. ओके, वो ना ही कोई नए बॉन्ड्स बना रहा है, कोई ना ही कोई बॉन्ड्स तोड़ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड. बट उसके होने की वजह से रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो दैट इज व्हाई मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट हियर. ओके, सो कैटलिस्ट का क्या काम है? उसके प्रेजेंस में, यानी अगर कैटलिस्ट आजू बाजू होगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज होने वाला है, रिएक्शन का जो स्पीड है वो चेंज होने वाला है. बट कोई केमिकल चेंज नहीं होने वाला है उस कैटलिस्ट को, ना कोई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ना कोई बॉन्ड्स फॉर्म होंगे. दैट इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट. ओके, सो यू ऑल नीड टू by heart the definition of a catalyst, and you all should also be able to give a example of catalyst. Okay, ये example दे दो catalyst का, या फिर कोई दूसरा याद कर लो catalyst का. Okay, but you have to by heart the definition of catalyst and an example of catalyst. Okay, so those were the 5 things that affect the rate of chemical reaction or the speed of chemical reaction. Now let us move on to a few end of chapter questions. Okay, so the first end of chapter question is, give scientific reasons. When the gas formed on heating limestone is passed through freshly prepared lime water, the lime water turns milky. We have seen this, right? We have seen this reaction. एक टेस्ट ट्यूब होता है, उस टेस्ट ट्यूब में we put some limestone which is calcium carbonate, उसको हीट करते हैं. फिर उसको हीट करने के बाद जो गैस निकल रही है हम लोग लाइम वाटर में डालते हैं, राइट? And again, what is lime water? Lime water is not नींबू पानी. Okay, lime water is water in which calcium hydroxide is mixed. Okay, so कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद जो गैस फॉर्म होता है उसको लाइम वाटर में पास कर देते हैं, और वो लाइम वाटर में बहुत टाइम के लिए पास करने के बाद वो गैस वो मिल्की व्हाइट कलर का हो जाता है, राइट? सो द क्वेश्चन इज वैसा क्यों हो रहा है, उसको हमें साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना है. ओके, so the answer is, this answer we had seen in 9th standard also. The same question, same give reason, and the same answer was given in your 9th standard textbook as well. Okay, so when limestone is heated, what is limestone? Calcium carbonate. Okay, so when limestone is heated, calcium oxide and carbon dioxide gas is formed, right? So calcium oxide है, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो calcium oxide पीछे रह जाता है और carbon dioxide बाहर निकलने लग जाता है. That we had seen through a reaction, right? So carbon dioxide is coming out. That carbon dioxide is then taken through a pipe in a test tube which has lime water. Okay, so when carbon dioxide gas is passed through freshly prepared lime water, again what is lime water? Calcium hydroxide जब पानी में mix करते हैं, aqueous मतलब क्या कि वो पानी में mix किया हुआ है. Okay, so calcium hydroxide को जब पानी में mix करते हैं we call it as lime water. So इस reaction से कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके करने का जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वियस सोल्यूशन, यानी पानी में जो मिक्स किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को,
उससे पास कर रहा है. सो दिस विल बी द रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, द सोल्यूशन टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम डाइऑक्साइड, सॉरी, calcium hydroxide plus carbon dioxide gives to the formation of calcium carbonate. Okay, but calcium carbonate is insoluble in water. Insoluble मतलब क्या? मिक्स नहीं हो सकता. soluble यानी मिक्स होना, insoluble उसका ऑपोजिट है. सो insoluble यानी मिक्स नहीं होगा. So calcium carbonate will not mix in water. अभी calcium carbonate if it is not mixing in water और उसका कलर व्हाइट होगा तो पूरा का पूरा जो लाइम वाटर है उसका कलर भी व्हाइट हो जाएगा. ओके, सो दैट इज व्हाई lime water turns milky when carbon dioxide is passed through it. So this is your answer to the first given reason. Okay, you all should be able to write both these chemical equations in the answer. Okay, with the chemical formula, molecular formula, as well as the name of the molecule. Both should be written in the chemical equation. Okay, that's your answer to the first give reason. Next give reason is it takes time for pieces of Shahabad tile to disappear in HCl, but its powder disappears rapidly. So let me explain this question a little. Okay, so again there are two similar experiments which are happening. एक तो है in one beaker we take Shahabad tile. Okay, it's a type of tile, एक special type के tile का नाम है वो. ओके, टाइल यानी जो फर्श पे हम लोग लगाते हैं टाइल्स उसको. ओके, तो एक स्पेशल टाइप का टाइल आता है जिसको बोलते हैं शाहबाद. ओके, सो हम लोग ने एक बीकर में शाहबाद टाइल का एक छोटा सा पीस ले लिया और दूसरे बीकर पे वी हैव टेकन पाउडर. ओके, किसका पाउडर लिया? शाहबाद टाइल का ही पाउडर लिया. सो यू टेक शाहबाद पाउडर, शाहबाद टाइल एंड यू स्टार्ट क्रशिंग. उसको तोड़ तोड़ के क्रश कर करके उसका पाउडर बन जाएगा. सो एक बीकर में हम लोग ने उसका एक बड़ा टुकड़ा ले लिया और दूसरे बीकर में उसका पाउडर बना के डाल दिया. ओके, एंड दोनों बीकर में हम लोग HCl डालने वाले. HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो ये जो बड़ा पीस है शाहबाद टाइल का उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और यहाँ पे शाहबाद टाइल का जो पाउडर है उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला. इन बोथ वी आर पुटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट रिएक्शन in which powder has been kept. Okay, powder disappears rapidly, यानी ये गायब हो जाता है जल्दी. ये जल्दी गायब हो जाता है, इसका क्या मतलब है कि ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो रही है. वेरएस टाइल पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं वो टाइल भी गायब हो रहा है बट वो काफी स्लो हो रहा है. So we have to explain why this is happening in this give reason. Okay, so we already know, right? दोनों में क्या फर्क था? यहाँ पे एक बड़ा टुकड़ा रखा था शाहबाद टाइल का और यहाँ पे पाउडर बना के रखा था, यानी ये जो पार्टिकल का साइज है वो छोटा था. So whenever the size of particle is small, the rate of reaction increases, right? That's what we have to explain in the answer. Okay, so the answer is this. Point number one, the rate of chemical reaction depends on the size of reactant particles taking part in the reaction. Okay, so कितना फास्ट या कितना स्लो वो रिएक्शन होने वाला है वो किस पे डिपेंड करता है? वो जो रिएक्टेंट है उसके पार्टिकल के साइजेस पे डिपेंड करता है. ओके, नेक्स्ट, स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन. जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे रिएक्शन का जो स्पीड होगा उतना ज्यादा होगा या फिर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई. ओके, the size of reactant particles is more in the pieces of शाहबाद टाइल as compared to the powder of शाहबाद टाइल. So जहां पे हम लोग ने शाहबाद टाइल का एक बड़ा टुकड़ा रख दिया उसका पार्टिकल का साइज ज्यादा है, whereas पाउडर में हम लोग ने जो बना के रखा शाहबाद टाइल्स का उसमें पार्टिकल ऑफ size of particles is very small, right? So that is the comparison of size of particles. Okay, so when HCl is added to pieces of शाहबाद टाइल, the CO2 effervescence. Now what is CO2 effervescence? CO2 हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड. effervescence क्या है? अगर बहुत जोर से अगर कोई गैस बाहर रिलीज हो रही है उसको बोलते हैं effervescence. Okay, I'm going to repeat that. If a gas is released with a lot of force and pressure, then it is known as effervescence. Okay, so when hydrochloric acid is added to the pieces of शाहबाद tile, CO2 effervescence is formed slowly. Okay, काफी स्लो होने वाला है अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को शाहबाद टाइल के टुकड़ों पे डालोगे. However, when HCl is added to शाहबाद powder, the CO2 effervescence formed is at a faster rate. Powder में speed ज्यादा होगा. Hence, now this is your conclusion. Okay, hence it takes time for pieces of शाहबाद tile to disappear in HCl, but the powder disappears rapidly.
सो दैट इज योर आंसर. ओके, सो बेसिक आंसर क्या था, जितना छोटा साइज होगा उतना स्पीड ऑफ रिएक्शन हाई होगा. उसको तुम्हें 4 पॉइंट्स में अरेंज करके आंसर लिखना है. व्हाट आई हैव नॉट डन इन दीज आंसर्स इज आई हैव नॉट अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स दैट आई एम गिविंग यू ऑल एज होमवर्क. ओके, whenever you're copying these answers in your notebooks, make sure you're underlining the important key points or underlining the important key terms or words in these particular exams, in this particular answers. Okay, we are going to move ahead. Next, while preparing dilute sulfuric acid from concentrated acid, okay, while preparing dilute sulfuric acid from concentrated sulfuric acid in the laboratory, the concentrated sulfuric acid is added slowly to water with constant stirring. Okay, यहाँ पे stirring missing है. With constant stirring. Stirring मतलब क्या? उसको mix करना. Okay. So again, I'll tell you what is happening in this particular question. So if you have very concentrated sulfuric acid, okay, you have very concentrated acid बहुत strong है, very strong acid. So concentrated sulfuric acid है, अभी इसको मुझे dilute करना है. मुझे इतना strong sulfuric acid use नहीं करना अपने experiment में, मुझे थोड़ा weak acid use करना है. Okay, थोड़ा diluted acid use करना है. So ये जो concentrated sulfuric acid है, इसको अगर मुझे dilute बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to add water. जितना ज्यादा पानी होगा उतना weak acid बन जाएगा वो, उतना ज्यादा dilute हो जाएगा. Similarly, for example, if you want to think of an analogy, अगर तुम लोग के पास पेंट है, ओके, और वो बहुत डार्क कलर है, उस डार्क कलर को तुम्हें लाइट कलर बनाना होगा, यू जस्ट ऐड सम वाटर टू इट, राइट, उस पेंट में, देन द कलर विच वाज डार्क इट बिकम्स लाइट. सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको तुम लोग को थोड़ा वीक बनाना है, डाइल्यूट बनाना है, तो तुम लोग उसमें पानी ऐड कर लोगे. बट एक्चुअल में जब ये लेबोरेटरी में करते हैं तब उसको कैसे बनाते हैं, ऐसा डायरेक्टली सब बॉटल लेके उसको इसमें डाल नहीं देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में. ओके, वो लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और उसमें धीरे धीरे पानी डालते हैं और कॉन्स्टेंटली उसको मिक्स करते रहते हैं. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस. वो लोग पानी कैसा डालते हैं, वो लोग बहुत फटाक से बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे. दे विल पुट वाटर इन द concentrated sulfuric acid very slowly, and while putting the water very slowly they are going to keep mixing it, keep stirring यानी mix करते रहेंगे धीरे धीरे. ओके, सो द क्वेश्चन इज ऐसा क्यों करते हैं, इसका साइंटिफिक रीजन देना है. ओके, सो द आंसर इज in the process of dilution of concentrated sulfuric acid with water, very large amount of heat is liberated. This process is highly exothermic. Okay, सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं पानी ऐड करके, तो बहुत ज्यादा हीट इज गिवन आउट. ओके, वो काफी हाईली एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक यानी क्या, द रिएक्शन इन विच लॉट ऑफ हीट इज गिवन आउट. As a result, if water is added to the concentrated sulfuric acid, then the water gets evaporated instantaneously. Okay, अगर तुम लोग ने बहुत जल्दी पानी डाल दिया, बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी पानी डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा कि उस हीट से वो इवापोरेट हो जाएगा पानी. तो जितना भी पानी डाला वो इवापोरेट हो गया. तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाइल्यूट होगा ही नहीं. डाइल्यूट कब होगा, जब पानी उसमें मिक्स होगा, राइट. बट मिक्स होने के लिए उसको तुम्हें धीरे धीरे डालना पड़ेगा. जल्दी से डाल दिया तो इतना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा कि वो इवापोरेट हो जाएगा हीट से, तो पानी कुछ गया ही नहीं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ, राइट. That's reason number 1. Reason number 2 is the mixture may splash out causing an accident. अगर तुम लोग ने बहुत जल्दी पानी डाल दिया तो उसके हीट की वजह से छोटा सा एक्सप्लोजन हो सकता है, और उस एक्सप्लोजन की वजह से पूरा एसिड तुम्हारे बॉडी पे गिर सकता है. एंड एसिड गोइंग ऑन योर बॉडी इट्स नॉट हेल्दी, और इट कैन बी डेंजरस. ओके, इट कैन कॉज एन स्मॉल एक्सीडेंट बिकॉज एक छोटा सा एक्सप्लोजन भी हो सकता है. डिपेंड्स तुम लोग कितना स्ट्रॉन्ग वो एसिड है और कितना जल्दी और कितना ज्यादा तुमने पानी डाला है. In order to prevent this, ऐसा ना हो इसीलिए the required amount of water is taken in a glass container. जितना पानी चाहिए उसको एक glass container में ले लो, and small quantity of concentrated sulfuric acid at a time is added with constant stirring. Okay, और थोड़ा थोड़ा sulfuric acid उस glass में जिसमें पानी लिया वो add करते हैं और constantly stir करते हैं. स्टरिंग मतलब मिक्स करते रहना. ओके, बार बार उसको मिक्स करते रहेंगे. सो ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, क्योंकि पानी भी कम लिया है हम लोग ने, सल्फ्यूरिक एसिड भी कम लिया है और बहुत धीरे धीरे डाल रहे हैं, इसलिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड. ओके, एक टाइम पे बहुत कम हीट प्रोड्यूस होगा. एंड फाइनली इज आवर कंक्लूजन. हेंस
while preparing dilute sulfuric acid from concentrated sulfuric acid in the laboratory. The concentrated sulfuric acid is added slowly to the water with constant stirring. Okay, basically hence लिखा है, comma लिखा और क्वेश्चन को वापस लिख दिया. That's our conclusion. Okay, मेन पॉइंट्स यहाँ पे 3 थे. What is the main idea of this answer? अगर जल्दी से तुम लोग पानी डाल दोगे तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि काफी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक्सोथर्मिक यानी जिसमें बहुत ज्यादा हीट देते हैं. हीट इज गिवन आउट. ओके, और इतना हीट की वजह से पूरा पानी इवापोरेट हो जाएगा, कुछ पानी उसमें मिक्स नहीं होगा, या फिर एक छोटा सा एक्सप्लोजन भी हो सकता है जिसकी वजह से पूरा एसिड तुम्हारे बॉडी पे भी गिर सकता है. सो एक एक्सीडेंट भी हो सकता है. ये ऐसा ना हो इसलिए हम लोग छोटे छोटे क्वांटिटीज में धीरे धीरे पानी डालते हैं और कंटिन्यूसली उसको मिक्स करते रहते हैं, स्टर करते रहते हैं. ओके, सो दैट्स योर आंसर टू द थर्ड गिव रीजन. Next is write answers to the following, which is question number 2 at the end of the chapter. And question number E of question number 2 is explain the similarity. Similarity यानी क्या same है, and difference यानी क्या अलग अलग है in two events, namely adding NaOH to water. NaOH को add कर रहे हैं हम लोग पानी में, and adding CaO to water. Okay, CaO. Again, what is NaOH? Can you tell me what is NaOH? NaOH is Na is sodium, OH is hydroxide. Similarly, Ca is calcium, O is oxide, calcium oxide. So NaOH is sodium hydroxide, CaO is calcium oxide. How was I able to tell this? Because I have by-hearted that particular table, right? इसलिए I'm telling you by-hearting that table is very important. Okay. So जब मैं NaOH को पानी में ऐड कर रहा हूँ और जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों इवेंट्स में क्या चीजें सेम है और क्या चीजें अलग अलग है, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन. ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जुलाई 2019 बोर्ड पेपर. ओके, फॉर 3 मार्क्स. इतना सा आंसर 3 मार्क के लिए पूछा था बोर्ड एग्जाम में 2019 के जुलाई वाले पेपर में. ओके, सो नाउ लेट अस सी द आंसर. सो फर्स्ट, सिमिलैरिटी. Heat is given away during this process, so it is an exothermic process. Similarly, when you add calcium oxide to water, even then heat is given out during the reaction, so it is an exothermic reaction. Adding water to sea हम लोग ने एक्सपेरिमेंट में देखा था, राइट? एक बीकर लिया था, उसमें CO के पीसेस थे बड़े बड़े व्हाइट कलर के, उसमें जैसे ही पानी डाल रहे थे हम लोग, उसमें पानी बॉईल होना शुरू हो रहा था, इसलिए उतना ज्यादा हीट उसमें प्रोड्यूस हो रहा था. So both these events are, or both these processes are exothermic processes. ये दोनों में सेम है. Okay, what is the difference then? क्या अलग अलग है? Firstly, no new substances are formed as the process involves only dissolution. Okay, dissolution यानी mix होना. Again I'm telling you, dissolution यानी mix होना. तो इसमें कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, बस डिसॉल्व हो रहा है. वो जो कुछ भी मॉलिक्यूल है NaOH वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है. Okay, an aqueous solution of NaOH is a strong base. If you remember in 9th standard we had studied there is something called as acid and there is something called as base, right? So whenever you mix NaOH in water, what you get is a base. Okay, now अगर NaOH को जब पानी में ऐड करते हैं, there is no new substances formed, then what is happening when you add CO in water? New substance called calcium hydroxide is formed which is less soluble and its aqueous solution is a weak base. Okay, so before we actually try to understand this particular point, let us look at the reaction. Okay, this is the reaction. Calcium oxide, which is a solid, when water is added to it, calcium hydroxide is produced and a lot of heat is given out, right? So in the first process कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. which substance is being formed? Calcium hydroxide is being formed. Okay, secondly, it is less soluble. ये काफी easily dissolve हो जाता है या फिर mix हो जाता है पानी में, but calcium hydroxide does not easily mix in water. Okay, so it is less soluble यानी mix होना, so easily mix नहीं होता. And its aqueous solution is a weak base. Okay, so यहाँ पे NaOH strong base था, whereas ये जो aqueous solution है calcium hydroxide plus water, वो weak base होता है. Okay, we know, right? कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड्स वीक होते हैं, या फिर कुछ एसिड्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, कुछ डाइल्यूट होते हैं. सिमिलरली कुछ बेसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बेसिस वीक होते हैं. ओके, सो NaOH plus water is a strong base, whereas calcium hydroxide plus water is a weak base.
These are the differences between two. बस इतना ही लिखना था और इतना लिखने का 3 मार्क मिल रहा था बोर्ड एग्जाम में. Okay, so make sure you're by hearting these end of chapter questions and memorizing them very well. Okay, you all should never forget end of chapter questions. Those are very important from the board point of view. So let me quickly revise. Rate of reaction means the speed of chemical reactions. They depend on 5 things. The first thing is nature of reactants. Nature यानी उसके क्या properties है, क्या characteristics है, कितना reactivity है. For example, you saw aluminium is more reactive than zinc. So it is aluminium is going to react faster. Then second thing we had saw was size of particles, right? शाहबाद टाइल्स जो है उसके पीसेस ले लिए, उसको उस पे एसिड डाल दिया और उसका पाउडर बना के उस पे एसिड डाल दिया, तो पाउडर वाला ज्यादा जल्दी रिएक्ट करने वाला है, फास्ट रिएक्शन होने वाला है. व्हाई? बिकॉज whenever the size of particles is small, the rate of reaction is high. Next, the concentration of reactants. Okay, अगर concentration of reactions ज्यादा होगा, I don't think we spoke about this one, right? C part हम लोग ने नहीं देखा था. So concentration of reactants यानी कितना strong acid बना है. जितना ज्यादा strong acid बनेगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा. जितना ज्यादा वीक एसिड होगा, जितना डाइल्यूटेड एसिड होगा, उतना ज्यादा स्लो रिएक्शन चलेगा. ओके, so that's point number 3, concentration of reactions. Next, temperature of reactions. More the temperature of reaction, the faster is the reaction, because ज्यादा temperature यानी ज्यादा energy मिलेगी reaction को. And last one was catalyst. What are catalyst? Those are substances in which through which those are substances which do not take part in the chemical reaction, but they change the speed of the reaction. That's catalyst. So these 5 things, or these are the 5 factors on which rate of chemical reaction depends on, and you all should be able to. Okay, before that, because today's objective was, you all should be able to explain rate of chemical reactions. क्या rate of chemical reaction किस speed से reaction हो रहा है, and enlist the factors affecting it. तो जो 5 factors है उसका list बनाने आना चाहिए from memory. Okay, and you should be able to explain. Okay, for example, particles छोटे हो गए तो rate of reaction increase होगा या decrease होगा, या फिर अगर temperature increase हो गया तो rate of reaction increase होगा या decrease होगा, so on and so forth. You should be able to explain all of those factors. So check for yourself whether you have accomplished today's learning objective. Okay, that's it for this learning session. I hope you enjoyed and you understood everything. I hope to see you all in the next one. Till then, bye, peace, have a nice day.